फुटप्रिंटिंग एंड जो हमने लेफ्ट किया था लास्ट टाइम वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है फुटप्रिंटिंग में दैट विल बी गूगल डॉक्स। सो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोल रहा हूँ सिक्योरिटी ट्रायल्स, जिसमें मैं लिखूँगा यहाँ पे गूगल डॉक्स, सॉरी गूगल डॉक्स। ओके, सो यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज कॉल्ड गूगल डॉक्स, बट यहाँ पे हम जस्ट टू द पॉइंट में आते हैं जो कि हमारे वेबसाइट की बात हो रही है। गूगल डॉक जो टेक्निक आपकी यूज होती है वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स होती है आपकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए किसी स्पेसिफिक टारगेट की। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो व्हाट इज कॉल्ड गूगल डॉक्स आल्सो नोन एज गूगल डॉकिंग और गूगल हैकिंग is a valuable resource for security researchers. For average person, Google is just a search engine used to find text, videos, and news. However, InfoSec world, Google is useful for hacking tools. How would any use Google to hack website? Google जो आप यूज होता है वो बहुत सारे डिफरेंट केस से यूज होता है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप यूज करेंगे वो आपकी वेब क्रॉलिंग कैपेबिलिटीज के लिए होती है। आइडेंटिफाई करना उनकी डायरेक्टरीज को जो कि अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बात करो, इट इज कैन इंडेक्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद इन द वेबसाइट इंक्लूडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. You can maybe exposing too much information about the web technologies, the usernames and the password and general vulnerabilities without knowing it. और गूगल डॉक्स में अगर आप यहाँ पे देखो वो बहुत सारी चीज़ों में यूज होती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर आपने देखा होगा कि आपने robo.txt यूज किया होगा। जैसे कि robo.txt की मैं नॉर्मल बता देता हूँ कि वो आपका मेजरली यूज होता है कौन से डायरेक्टरीज अलाउ एंड डिसअलाउ है स्पेसिफिक डायरेक्टरी में। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल की बात करूँ, गूगल में robo.txt अगर फाइल्स है तो वो हमें बेसिकली मेंशन करेगा कि कौन से अलाउ एंड डिसअलाउ डायरेक्टरीज है। .txt allow directories is all about search about static और search how search works. disallow जो कर रखा है यहाँ पे sds group index.html फाइल और यहाँ पे / कुछ allow directories, ये जो आपके बेसिकली यूज होते हैं अलाउ एंड डिसअलाउ डायरेक्टरीज आपके एक स्पेसिफिक यूजर के लिए यूज होते हैं कि उनको कौन कौन सी डायरेक्टरी में परमिशन है कौन से नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोई भी एक वेबसाइट ले लेते हैं, जैसे फेसबुक की बात करते हैं, ये जो robo.txt आपका यूज होता है कभी कभार ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील करने के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ पे डिसअलाउज, और अगर आप यहाँ पे देखो अलाउ डायरेक्टरीज में यूजर एजेंट अल्फाबेट्स अलाउ जो कि यहाँ पे नॉर्मल एंड पॉइंट यूजर के लिए है। So there are many ways that we can use it for information gathering part. और robo.txt आपकी सबसे ज्यादा यूज होती है डायरेक्टरीज को चेक करने के लिए, यानी कि क्रॉलिंग वेब क्रॉलर से बचने के लिए, जिससे वो आइडेंटिफाई ना कर सके। अगर आप यहाँ पे सर्च करो robots.txt HackerOne रिपोर्ट, विजिबिलिटी ऑफ robo.txt जो कि आपकी 2007 से रिपोर्ट्स है यहाँ पे HackerOne जो कि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आपका हैकिंग के लिए। जैसे कि अगर मैं पहला वाला ओपन करके दिखाऊं आपको विजिबिलिटी ऑफ robo.txt फाइल HackerOne, Zomato की वेबसाइट में किसी ने निकाला था। The file robo.txt is used to give instruction of web robots such as search engines, crawlers, about location with the websites, and robo.txt allows or not allowed. और यहाँ पे देखो कौन कौन से डिसअलाउज दे रखे थे, एडमिन, क्लाइंट, एसीडी, वॉइस, पीएचपी, डाउनलोड्स, ये सारे डायरेक्टरीज हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो इसने एक png फाइल भी दे रखी है। ओके, ये डाउनलोड होगा क्या, देखते हैं। आई थिंक से हार्ड, अच्छा ये रहा, ये देखो
robo.txt में अगर कोई अलाउ डिसअलाउ डायरेक्टरीज हो रही है तो कभी कभार वो भी आपको बाउंड्रीज मिल जाती है, बट अगर उस स्पेसिफिक डायरेक्टरी को एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं, जिसमें आपका गूगल बॉट मोबाइल, ये देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं। Hi Santosh, thanks for your detailed report. We have access restriction to the URLs. Those are present in the robo.txt. Thanks, Venom. यहाँ पे पूरी इश्यूज के बारे में बता रखी है। डायरेक्टरी लिस्टिंग आई एम नॉट एबल टू डाउनलोड। सर हाँ जी सर, इतनी इंफॉर्मेशन लीक करेगा तो क्यों यूज करेंगे robot.txt उनके डेवलपमेंट में? इतनी इंफॉर्मेशन, वो सेंसिटिव डायरेक्टरीज भी रिवील हो जाती है कई बार। हम सेंसिटिव डायरेक्टरीज को हाइड करते हैं, जैसे कि हमारा एडमिन डायरेक्टरी हो गया या कोई लॉगिन का सी पैनल हो गया, अगर कोई भी इसको फेच कर पा रहा है यानी कि एक्सेस कर पा रहा है तो वो एक वल्नरेबल चीज हो जाएगी सर्वर के लिए, क्लाइंट के लिए। हाँ, वो लोग लोकली रख सकते हैं ना robot.txt। इतना वर्नेबल मतलब ओपन सोर्स क्यों रखा है पूरे वेबसाइट पे? वो तो मिसकॉन्फ़िगरेशन वर्ड बोलूंगा मैं। ओके, तो कंपलसरी आप वेबसाइट डिप्लॉय करेगा तो robot.txt होगी? यस, बिल्कुल होगी। ओके जैसे कि मैं यहाँ पे जो यूज करने वाला हूँ गूगल डॉक्स, जिसमें हम पॉपुलर गूगल डॉक्स यूज करेंगे। जिसमें से अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे कैश है। दिस डॉक विल शो यू द कैशे वर्जन ऑफ द वेबसाइट। अगर यहाँ पे देखो, जैसे इन्होंने दे रखा है सिक्योरिटी ट्रायल्स और कैशे, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये आप कहाँ पे यूज करोगे? अपने गूगल की सर्च इंजन में यूज करोगे। कैशे फाइल में बेसिकली होती क्या अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्रीज, नॉर्मल थिंग्स। यहाँ पे सारे के सारे आपके डीएनएस रिकॉर्ड्स के कैशे फाइल्स आ जाएंगे कि उसके रिलेटेड आपने क्या क्या यूज किया था और कब यूज किया था। जैसे यहाँ पे ट्रिपल ए रिकॉर्ड दे रखा है। ट्रिपल ए रिकॉर्ड किस लिए होता है? आपके IPv6 के लिए यूज होता है, और सिंगल ए यूज होता है आपके IPv4 के लिए। जैसे ऑल इन टेक्स्ट, सर्च फॉर द स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेन एनी वेब पेजेस। फॉर अगर एग्जांपल मैं ये यूज करता हूँ ऑल इन टेक्स्ट, गिव मी सम 2 मिनट्स। यस, सो वी कैन यूज सम गूगल डॉक्स ओवर हियर। तो मैं अगर ऑल इन टेक्स्ट में कुछ भी लिख दूं, जैसे कि यहाँ पे हैकिंग वर्ड लिख देता हूँ, हैकिंग रिलेटेड स्टफ्स, सो ऑल द थिंग्स विल बी हैकिंग ओवर हियर। बट यहाँ पे मैं मान लो कि आई एम अ गुड लवर ऑफ शूज, सो इफ आई राइट शूज ओवर हियर, all the things will be related to shoes over here. But the most important part, जब आप security tools को use करते हो तो हर एक URL, हर एक chat का यहाँ पे important है। All in title, exactly the same as all in text, but it will show you the page that contains the, your security page. जो यहाँ पे title की बात हो रही है, ये देखो, ये होता है आपका title और ये होता है आपका description और ये आपका पूरा center होता है। तो hackers ने कैसे use करते हैं?
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे कोई वेबसाइट को हाईलाइट करना है, जैसे कि इन यूआरएल टैग यूज करता हूँ। इन यूआरएल में जो भी डालूंगा, जैसे कि मान लो कि एचटीटीपी इन यूआरएल जो यहाँ पे दे रखा है, मुझे इन यूआरएल पे एचटीटीपी वेबसाइट चाहिए और मैं यहाँ पे साइट यूज करूंगा। साइट फंक्शन जो हम यूज करते हैं वो हमारी क्लासिफिक लोकेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे IN डालूंगा तो ये इंडिया हो जाएगा, PK पाकिस्तान के लिए, EU यूरोप के लिए, RU रशिया के लिए। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे PK डाल दूँ, मुझे साइट पाकिस्तान की वेबसाइट चाहिए और इन टेक्स्ट में मैं डाल देता हूँ कि मुझे उनकी जो वेबसाइट चाहिए वो मुझे कुछ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट चाहिए। तो मैं यहाँ पे CA इंस्टीट्यूट लिख देता हूँ। तो 31 रिजल्ट आए हैं, देख लो। एसेंशियल क्लिनिकल बुलियन एल्जीब्रा, देख लो। सारे के सारे आपको पाकिस्तान की वेबसाइट मिलेगी। सर इंटेक्स का काम क्या है? इंटेक्स का काम जो भी आप यहाँ पे टाइटल लिखोगे, ओके, टाइटल। हाँ टाइटल, यानी देखो हर एक टाइटल में आप देखोगे अब आएगी गेमिंग्स की, शॉपिंग की। या इन टाइटल यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये था ऑल इन टाइटल। शॉपिंग्स आप देख सकते हो। अब 2 रिजल्ट आई। बट हैकर्स इसका क्या यूज करते हैं? हैकर्स जो, यानी कि सिंपल मैं अगर नॉर्मल सिक्योरिटी की बात करूं तो यहाँ पे इन यूआरएल फाइल टाइप को कौन सा चाहिए, आपका ऑल इन यूआरएल और इन यूआरएल पूरे डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए। अगर आप यहाँ पे इन यूआरएल पे एडमिन लिख दो तो जिसमें एडमिन डायरेक्टरीज होगी वो सारी सारी यहाँ पे फाइंड करके देगा। ओके, he caught me because गूगल डॉक सबसे ज्यादा यूज करोगे तो ये आपको ये वार्निंग देगा ही देगा। तो आप यहाँ पे देखो सब में अब एडमिन लॉगिन्स आ गए, देखो। This is a government of Ministry Water Resources, so we are not going to use this one because this is Pune, Maharashtra, and some has been Ministry of Military Affairs, and most of the websites over here are HTTP, National Information Center. You can see it. फेक है क्या सर? हाँ, फेक है क्या सर HTTP यूज कर? मतलब आप लो इंक्रिप्शन यूज कर रहे हो, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन इजीली हो जाएगा आपका। ओके, उसमें कोई फायदा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इन टाइटल्स यूज करो, हर एक इन टाइटल के लिए आपका अलग दे रखा है। लिंक के लिए शो द लिस्ट ऑफ वेब पेजेस दैट हैव लिंक विद अ स्पेसिफिक वेबसाइट। दिस इज नाइस। सारे सारे वेबसाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि हमारे कुछ भी हो। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करूंगा craw.in की वेबसाइट्स। ये सारे के सारे लिंक्स बता देगा जो कि इंटर रिलेटेड आपके craw.in के। तो आई गेस अगर मैं इतनी बात करूँ it will take a lot of time. You can see one by one all the things over here. Site will show you the full list of the index. Asterisk marks जो हम यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए यूज करते हैं। It's a logical operator. Security tips which shows you all the sites containing security. बट अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओ, लॉग फाइल्स को अगर चेक करने के लिए किसी की वेबसाइट में, तो आप ये डाल सकते हो ऑल इन टेक्स्ट यूजर नेम्स एंड फाइल टाइप लॉग्स। देयर विल बी लॉट्स ऑफ लॉग्स ओवर देयर। जैसे कि यहाँ पे फायरफॉक्स और पासवर्ड दे रखे, जैसे कि आपके ईमेल्स और सम पासवर्ड्स ओवर हियर, यूजर नेम्स, some emails over here again.
रोएडिलास केसेस, ये नॉर्मल आपके डिफॉल्ट्स है. Log files are the important because you need to understand all the things over there one by one. Sorry, that email exists, doesn't exist. These some errors. These are some logs. और ये किसके logs हैं? इसके. इसकी वेबसाइट है क्या? ये है WP कंटेंट, यानी कि वर्डप्रेस वेबसाइट है. अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, see, this is a WordPress website. See, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं? फेडोरा. डेटाबेस उसका ओपन है. चलो मैं इसका robot.txt दिखाता हूँ आपको. WP एडमिन पेज है अवेलेबल, देख रहे हो, जहाँ पे हम लॉग इन कर सकते हैं. दिस इज केस सेंसिटिव. एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो आउटडेटेड वर्जन ऑफ वर्डप्रेस चला रहे हैं 4.9. सो दिस इज द क्रिटिकल थिंग. तो एक एक इंफॉर्मेशन रिवील करना और robot.txt का देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर. सर उस वेबसाइट में सारी इन्फॉर्मेशन देके रखे, ओएस और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज हो रहा, तो वो वनरेबल है. यहाँ पे फुटप्रिंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है. फुटप्रिंटिंग तो हाँ जी, आप बोलिए पहले. वो पूरे इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, जैसे कि ओएस कौन सा ओएस यूज कर रहे, कौन सा लैंग्वेज प्लेटफॉर्म यूज कर रहे, कौन सा वर्जन ऑफ वर्डप्रेस यूज कर रहे, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ही मिल जाती है. वेबलाइजर में. हाँ सर. बट यहाँ पे बहुत सारे एक ही तरीके नहीं है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं. मैं करा रहा हूँ. There are many ways that we can do it. ओके सर. For example, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे vulnerable web servers भी देख सकते हो. The following doc can be used to detect vulnerable or hacked server that allow you to attend the procedure directory in URL. Google Doc helps in various ways. So, for example, you can see यहाँ पे पूरा path ही दे दिया server का, ठीक है? This is full path of the server, क्योंकि उसके www में बैठा है, यानी HTML. And you can read some files, and you can download some files also. phpMyAdmin. And which command he used? He used the in URL process self. This was a different one. CWD. So in the real life, Google Docs can be helped in various ways. So in the Google Doc, you can see OpenFTP server, where in title text file, env files. Env files are one of the popular web development framework to declare general variables and configuration files in the local dev environment, device environment. Private SSH key. See this one. And nowadays it's basically high demand in use. इसी की private key निकालना, public key, RSA. See, this is a private key. इसी का कौन सी कंपनी है? Skypark.pl. You can search lots of other websites for this one. There are many things. In Google Docs, you can sort the queries to identify the files over there. Emails of list. If you want to find some email addresses, you can find this one. File type, logs, username, putty. There are many ways that you can use. Live cameras. You can find the live cameras over here. In URL top.html, in URL current time. In title webcam.xfile.
कैमरे का नाम पूरा। Some are open, and this is live right now. सर ये पूरे रैंडम अटैक्स है ना? ये पूरे रैंडम इंफॉर्मेशन गैदरिंग है ना? मतलब स्पेसिफिक तो कर नहीं सकते ना? स्पेसिफिक कर सकते हैं अगर आपको उस वेबसाइट का नाम पता है। सबसे ज्यादा अगर आपको ओपन लाइव आईपी एड्रेस चाहिए, so you can go to the website called Shodan. Shodan is one of the biggest search engine for hackers, and you will get all the live services. But आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री वर्जन में आप सिंपली किसी स्पेसिफिक देख सकते हो। जैसे कि मैं Windows 7 बोलता हूँ, तो I can see all the live devices over there, and you can see this is India, which is an IP address. और उसमें कौन कौन से पोर्ट ओपन है? 480, 443 और 1000 पोर्ट। और उसका ये देखो, उस सर्वर का कौन सा चल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट IIS चल रहा है, विंडोज सर्वर। जो IIS है आपका, ये आपका वेब सर्वर यूज होता है आपके वेब एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए। रॉ डेटा, आई नीड टू लॉग इन फॉर दैट। यहाँ पे आप सारी चीजें ढूंढ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं वेबएक्स दे भी दूँ, यहाँ पे वेबएक्स 5 XP, ये कैमरे का जो नाम है यहाँ पे, Sudan. Okay, this is on remote. It's asking me a username and password. Some might be free or some might not be. So all you have to do is to check one by one. Shodan is basically used for checking the live network devices which are connected with the networking part. So अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है आप Shodan में कर सकते हो। And most of the hackers, they simply come over here to check the live number of devices. You can simply scan this one, but they will create some logs. View on map. You're gonna ask for the user. सर स्पेसिफिक आईपी रख के सर्च कर सकते क्या? किसकी करनी है बताइए? बट उसके लिए आपको यहाँ पे Shodan ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ओके। सर्च फॉर Shodan ऑपरेटर्स। Like these operators: data, IP, strings, port, organization, location, country code. See, there are some operators that can be used, और ये सारे के सारे operators पता होने चाहिए। Search filter, country, organization, org, जिसके बारे में निकालनी है आपको information. And if you go to the tutorials, you will see lots of things there. Which port they are using, which are the services they are running, each and everything will be there. So it's all about information gathering part. Find Apache server in San Francisco, Apache city, and Apache and the city name you want. Ignis server, Ignis or country name, Germany. Find a Google web server, host name. Find Cisco on a particular subnet. See this one. There are many things that can be used over there in the Shodan.com. And the most important part is to check each and every
Data export, you can export your result in various formats using the top menu after you perform research. Browser search, you can continue your browser to search for ads. There are lots of things. Through the Shodan website, you can gather the information as much as you want, and it will show you the live devices in entire network part. So it's all depends which string have you used over there. In the most of the cases जो आप यहाँ पे देखोगे सारे entire network devices को identify करेंगे. Is it clear to everyone? sir. Everyone, Sir. Vikash, Taranjit. Yes, sir. Yes, okay. Cool. Okay, so the next thing, let's talk about the Eccouncil again. So I'm going to take this website again. We can use one tool which is called WhatWeb. WhatWeb ये आपका एक टूल यूज होता है आपके आइडेंटिफाई करने के लिए उस सर्वर की वेब टेक्नोलॉजीज को. तो अगर आप यहाँ पे मैन करो, मैन मीन्स मैनुअल, WhatWeb identify website, it goes to answer the questions. What is that website? What website recognizes technologies in it? Embedded devices, what are over 1700 plugins, each recognizes tools. You can see all the things one by one. So इनका मेजरली काम क्या है, पूरे सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है कि इसको कौन सी सर्विस चल रही है. तो अगर मैं यहाँ पे WhatWeb-v जो कि वर्बोज है और यहाँ पे डोमेन नेम दे देता हूँ क्योंकि हमारे eccouncil.org. सो जो हमने वेबलाइजर यूज किया था वो हम लोग यहाँ पे टर्मिनल में WhatWeb के थ्रू भी कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे देखो IP एड्रेस, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, समरी, रीडायरेक्शन, कॉमन, HTTP हेडर्स, और अगर आप थोड़ा सा वो नीचे आते रहो तो आपको दिख जाएगा कि HTTP की एक क्लाउडफेयर है, क्लाउडफेयर यूज कर रहे हैं लोग, कुकीज, HTTP हेडर्स, रीडायरेक्शंस, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि वो वर्डप्रेस की वेबसाइट है. You can gather as much as information over here. jQuery version, Lightbox, metagenerator, magnifier, powered by scripts, and lots of things. And it will make an active reconnaissance because यहाँ पे देखो ये आपके HTTP headers, ये response code है आपके server sites. इसमें से यहाँ पे 200 आता है. और अगर आप यहाँ पे देखो, कभी कभार यहाँ पे sensitive data रिवील हो जाती है, जैसे उसका सर्वर कौन सा चल रहा है. तो यहाँ पे तो क्लाउडफेयर ही है बेसिकली. और लिंक, एक्स प्रोटेक्शन, फ्रेमवर्क, रेफरल लिंक, स्ट्रिक्ट ओरिजिन्स. ओके, so WhatWeb is also one of the best tool for active reconnaissance part. ये आपकी information gathering करने के लिए यूज होता है. So there are various ways that we can use it. For example, अगर आप यहाँ पे देखो, there is a website called BuiltWith. Built with technology. So this is also one of the best website. For example, मैं यहाँ पे इसी टारगेट को लेने वाला हूँ पहली बात तो eccouncil.org, और आप देख सकते हो कि उसमें कौन कौन सी प्रोफाइल्स, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है. पिक्सल, क्लाउडफेयर, गूगल ऑप्टिमाइज 360, एनालिस्टिक, क्लाउडफेयर रॉकेट लॉन्चर, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. Each and everything is given. Like Biget, which kind of Biget they are using, gadgets, Zupin, Cookie Pro, Monster Insight, OneTrust, Awesome. You can see lots of applications they are using. WordPress. This is also one of the best tools for identifying each and everything which is running. But I guess most of the people they will refer Webalizer. Details technology of the profile. So you can see a proper thing when they have implemented and whenever it's detected, each and everything. So जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो metadata profile में भी कभी कभार डेटा मिल जाती है. So they are asking me some login parts. So login करते हैं. तो मैं यहाँ पे अपना मेल temp mail यूज करूँगा. Let's use the disposal temp mail over here.
I'm not going to use my personal one, so I'm going to use a temporary one for a specific period of time. So let's copy this one. Yeah, you want to log in, sign up for free. Yes, please. Pick a link. Choose a password. Okay. I'm not a robot. Traffic lights. Correct. So you can see I'm logged in right now, and over here we can see eccouncil.org, metadata characters, address of that specific one. Some phone numbers, Tall, New Mexico, Miami. You can see international e-commerce site. The name is Jeb Bevesi, the president, and you can gather the information of that person. Okay, I guess I need to sign in, and this is also Eccouncil. I need to sign in, or we can look for other things. Jeb Bevesi, we can see it here. Eccouncil president. So there are many ways that we can gather the information. For example, you can see sometimes they reveal some information over here also. Personal information, relationship profile, interconnected person, you can say. Yes, verification please. This verified. And it's gonna ask me for this one. I have to copy this one over here, and I have to run over here to verify. Yes, continue. The main thing which I want to see is their reports. So this is also known as reconnaissance part. You can gather the information about your target. We can simply, I'm going to copy this one again over here. Look, copies all together. All the relationships has been done with them. You can see the websites, connected websites with them. These all are the websites which are connected with the EC councils. See, you can see that from a year they have connected, and it will show you all the information that you're looking for. Redirect profile. Okay, there's nothing that much fine. So through the build tweet, you can also gather the information about your target and in many various ways. But there are lots of other websites also that you can use. Many people, they ask me, sir, how are we gonna gather the information? If we gather the information about the target, what are the email address are there? So let's try to gather the email address of the eccouncil.org. So for that case, what I'm gonna do, I'm gonna use a tool called the Harvester. Okay, the Harvester should be like this. The Harvester is basically used to extract or enumerate the email address of the websites. So we're gonna enumerate some email address, extract some email address over here from the website Eccouncil. So for example, हम लोग यहाँ पे -d use करेंगे जो कि domain name के लिए use होगा. -b कौन से source से लेना है? Baidu, Bing API, Census, CertSS, Google Fill. यहाँ पे बहुत सारे websites हैं जो आप use कर सकते हो. -g आप यहाँ पे देख सकते हो, Google Docs भी use कर सकते हो.
तो अब ये क्या करेगा फिर? ये आपकी ईमेल एड्रेस को एनुमरेट करने के लिए यूज होता है। अलग अलग सोर्स इंजन को हम यूज करते हैं ईमेल एक्सट्रैक्शन के लिए। जैसे मान लो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मुझे चेक करना है कि हमने यूज किया था ना, क्या यूज किया था, यू गेट सिग्नल यूज किया था हमने लास्ट टाइम, यू गेट सिग्नल, अच्छा यू यूज गेट, किया था हाँ 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 लिस्ट ऑफ सब डोमेन्स के लिए। हाँ, तो कौन कौन से उस नेटवर्क में डिपार्टमेंट में कनेक्टेड है। बट हाँ यहाँ पे अगर आप bing.com यूज करो, bing.com से भी हम डेटा फैच कर सकते हैं। So, bing.com में भी आप डेटा फैच कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आईपी या कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मान लो कि मैं अगर इसी काउंसिल के नाम दे दूं यहाँ पे, यहाँ पे आईपी तो नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा साइट। फर्स्ट ऑफ ऑल साइट ऑपरेटर, ओके, सो आई गेस इट्स गोना यूज ओनली आईपी एड्रेस। तो एक काम करते हैं, होस्ट ecouncil.org, इसका आईपी एड्रेस निकालते हैं, -t capital A। Okay, here we have the IP address, name service IP address. So let's copy over here. ये सारे के सारे जो डेटास हैं आपके इंटरकनेक्टेड है आपके ईसी काउंसिल के वेबसाइट से। एस्पेन, साइबर सिक्योरिटी कोर्सेस, लंदन फोर्ट सिटी, we can see all the things will be interconnected with the EC councils. Certifications, network certificate defender. You can get also the information from the websites like IP department, interconnected websites. Our number of result are 3 lakhs over there. मतलब सब डोमेन्स है ना फिर? सब डोमेन्स। फॉर एग्जांपल जो आपका यहाँ पे मैं बता ही रहा था कि जो आपके जो दी हार्वेस्टर जो टूल यूज होता है आपके ईमेल एड्रेस को एनुमरेट करने के लिए यूज होता है, एक्सट्रैक्शन करने के लिए यूज होता है। सो देयर आर वेरियस टेक्निक्स दैट दे कैन यूज फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग पार्ट। टारगेट की ईमेल्स एड्रेस भी निकालनी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे डोमेन नेम जैसे माइक्रोसॉफ्ट दे रखा है, -l, एल होता है आपका नंबर ऑफ लिमिट ऑफ स्कैन, -b जो आपका सोर्स डेटा होगा, कहाँ से आप डेटा को फेच करोगे, जैसे बाइडू और बिंग एपीआई, क्योंकि हर एक सर्च इंजन का अलग अलग आउटपुट होता है। तो मैं यहाँ पे जो दी हार्वेस्टर यूज करूंगा, जैसे कि -d डोमेन इसी काउंसिलर ले लेते हैं। अच्छा, तो एक मिनट मैं नेम से उनको कॉपी कर देता हूँ, एक डीएनएस को। -l लिमिट ऑफ स्कैन 500, -b तो सबसे पहले मैं जो सोर्स यूज करूंगा वो होगा गूगल से इंफॉर्मेशन निकालना कि गूगल से इसकी कौन कौन से ईमेल एड्रेस निकलते हैं। सो इट्स गोना टेक सम टाइम। तो यहाँ पे कुछ एरर आया, सर्चिंग इन गूगल जीरो अलर्ट। ओके, सो यहाँ पे सर्च करते हैं, हमारी क्रॉकी कर लेते हैं। Searching 100 result, 200 result. Okay, still I am facing some error, guys. तो यहाँ पे गूगल ही था ना, एक मिनट। गूगल, ठीक है, -b सोर्स गूगल, ठीक है, -l 500, -d प्रोडक्ट इन which is domain, -b हार्वेस्ट।
सो मैं गूगल हटा के यहाँ पे यूज कर देता हूँ, लिंक्डइन कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे पर्सन्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ गई हैं रिलेटेड टू क्राउड.इन। कि उस वेबसाइट में कौन कौन से पर्सन्स काम करते हैं। जैसे पंकज यादव यहाँ पे हो गए ऑपरेशन मैनेजर क्रॉ सिक्योरिटी के, पीयूष मलिक, सागर सिक्या, पंकज, सुलभ राज, यू कैन से वेब डेवलपर, संदीप जांगे। ये जो जितने भी आपकी डेटा फेच कर रहे हैं ये आपके लिंक्डइन सोर्स इंडेक्स से फेच कर रहे हैं। सिक्योरिटी कंसल्टेंट आयान शाह, वाइड अप, there are lots of other things that we are using. I'm fetching all the data from LinkedIn department. That's why अगर आप अलग अलग सर्च इंजन को यहाँ पे यूज कर, जैसे कि यहाँ पे गूगल का नहीं आ रहा एक्चुअली, तो नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, या सो यहाँ पे ईमेल एड्रेस फाइनली वी कैन सी देयर आर सम craw.in एंड सम info craw.in एंड info@. तो अब मैं इसमें यूज करता हूँ इसी काउंसिल के, एक बार ट्राई करते हैं फिर से। हाँ हाँ जी बोलिए। कमीशन सो यहाँ पे 300, 200, 100 यहाँ पे हो रहा है। So I guess this time they are scanning the entire network device to identify the email address. तो यहाँ पे अगर आप देखो eccouncil.org में यहाँ पे सर्ट मैनेजर, टेक सपोर्ट, जॉन इकाउंटर, स्मिथ और फर्स्ट इसी काउंसिल, ये सारे के सारे आपके ईमेल एड्रेस जो हमें एक्सट्रैक्ट हुए हैं। और ये आप देख सकते हो कि ये अलग अलग डोमेन्स इन्होंने यूज किया है। eccouncil.org, aspen eccouncil.org, cisco EC Council, IC Council और your eccouncil.org पर। There are many other techniques that can be used for information gathering part. Sublister जो यहाँ पे email address के लिए हम यूज कर रहे थे, harvester is basically used to enumerate the email address of the specific domain. इसमें हमने यहाँ पे eccouncil.org का निकाल दिया। बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं आपके ईमेल एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि मैं अगर बात करूं, अगर आप गिटहब जो आपकी गिटहब की जो डायरेक्टरी है, गिटहब is one of the best website where you can simply get all the details और आपका exploit DB, जहाँ पे you will find all the exploits regarding vulnerabilities। इसमें से मैं अगर यहाँ पे गिटहब से क्या लेने वाला हूँ, मैं यहाँ पे गिटहब से एक टूल लेने वाला हूँ, सबलिस्टर। सबलिस्टर जो आपका यूज होता है वो आपके एनिमेशन के लिए यूज होता है, यानी कि आपकी सब डायरेक्टरीज को फाइंड करने के लिए। या आप सब फाइंडर यूज कर सकते हो, या knock.py या सब ग्रुप यूज कर सकते हो, या सब डोमेन एनिमेशन। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रखी है। चलो एक चीज करते हैं, सबलिस्टर पर एक काम करते हैं। Sublister is also one of the tool which is basically used to find the subdomains। और यहाँ पे जो मेथोलॉजी यूज हो रही है वो आपकी ओसेंड होती है।
ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। तो अगर आप ये डाउनलोड करो सबलिस्टर, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है सबलिस्टर, पाइथन सबलिस्टर, IFND डोमेन, IFND, IFND threads or IFND port numbers. So we're gonna download this one. So let's download. ये काम करता है, URL को कॉपी कर लेता हूँ। और इसको git clone कमांड से फेच कर लेता हूँ। github clone repository 2. So cd सबलिस्टर हमारा यहाँ पे है, तो मैं इसको सबलिस्टर ls all, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे python डॉट फाइल है, तो यहाँ पे मैं python सबलिस्टर यूज करूँगा। सबलिस्टर, okay, so over here सबलिस्टर -help first of all, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा -d डोमेन के लिए, -b brute force यूज कर सकते हैं, -b स्पेसिफिक पोर्ट देखने के लिए, वर्बोस थ्रेड्स यानी कि फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए। सो मैं यहाँ पे -d यूज करूँगा डोमेन के लिए, जो कि मेरा eccouncil.org होगा। -t थ्रेड्स फास्ट एग्जीक्यूशन 50 दूंगा मैं, और चलो यही ट्राई करते हैं अभी। तो ये जो डेटा को फेच करेगा, अगर आप यहाँ पे देखो, ये बाइडू सर्च इंजन हो गया, याहू, गूगल, बिंग, ये सारे के सारे आपके सर्च इंजन हैं जिसको हम डेटा को एनोमेशन के लिए यूज करते हैं। So one by one, all the things will be there. Look, सर यहाँ Google पे ब्लैक कर रहा है। लैग कर रहा है, यहाँ पे गूगल ने हमें रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया। Because we were trying some malicious activities over there, that's why. You can try various activities. तो यहाँ पे एक काम करते हैं, टेस्टिंग वेबसाइट ही ले लेता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे टेस्ट php.oneweb, जो ये डोमेन है oneweb.com, इसको लिख लेता हूँ। दिस इज अ टेस्टिंग वेबसाइट। So again our data has been blocking. Now see, all the websites are over here, जो कि आपके oneweb.com से ही है। That was home of Acunetics. So this is also one of the tools that can be used for attacking part or information gathering part. सारे के सारे था आपके सर ये? सारे के सारे सब डोमेन्स आपके, ओके ओके, ये सारे के सारे आपके सब डोमेन्स आप देखो ना, सब डोमेन्स है admin oneweb.com, ये देखो, एड्स, अल्फा, एंटीवायरस, ESP, ये सारे के सारे आपके वन ऑफ की सब डोमेन्स है। सब डोमेन्स के टूल को यूज करने का आपके बहुत सारे सब डोमेन्स के टूल्स हैं, जैसे आपके यहाँ पे सब रूट भी था, सब रूट जो फाइल है आपकी, प्लीज स्पेसिफाई ऑप्शंस -help। सब रूट जो भी है वो भी आपका यही काम करता है, सेम चीज काम करता है।
You can specify the domain name. So there are lots of techniques. For example, यहाँ पे types की बात करते हैं. C name check करने के लिए उसका duplicate कोई domain है कि नहीं, IPv6 TXT file को reveal हो रही है कि नहीं, so MX file कौन सी है. So there are lots of things that we can use. Subdomain hyphen type is equal to cname. So there are lots of other tools that can be used just like the subdomain lister, the sublet lister. और यहाँ पे अगर आप देखो information gathering के लिए बहुत सारे tools जो आपके अभी आपके पैसिव जो टूल्स है वो हम ब्राउजर की तरफ कर रहे हैं और जो एक्टिव टूल्स है वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे. सो अगर मैं पैसिव टूल्स की बात करूँ तो इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द वेबसाइट्स and the active information that we are getting the data from with the help of tools. WhatWeb हो गया आपका, the harvester हो गया और आपकी sublister हो गया. So there are many techniques that can be used for information gathering part. Is it clear to everyone? Answer. Yes, sir. Yes, sir. But the most important part is to check the information gathering. And I guess the last website we forget, I guess this one, that was Who is Lookup. Who is Lookup is also one of the best websites for getting the information about the target domain. So I'm going to look for the whois.net, I guess. Search the Whois database, yes. Let's try with the Eccouncil. Search this one. You will get all the information when it was created in the 2001 and when it was last updated. The URL to register to network solution, the registration domain ID number, the contact phone numbers, the resellers. You can see some of the name servers we were talking about. There are two name servers, Henry and Zelda. I guess we have done this one on the DNS dumpster also, but you have to look all the other things. There are lots of vulnerabilities over there, one by one, that can be used in various types. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना है each and every things that you have learned. और एक और वेबसाइट है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वो आपका archive.org, internetarchive.org. This is also one of the best website where you can simply look the very first look कि सबसे पहला look वो कब था, कैसा look. You can also get the information from this. You can start from in the year of 2001, the Eccouncil website has created. No, the Eccouncil website was created in 2002. And यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो first इसके updates हुए थे वो आपके June 8 को हुए थे. So over here you can see the very first look of any of the website they have created. ये आपका सबसे पहला आपकी Eccouncil की website. उस टाइम आपके 3 कोर्स होते थे, CEA, CEP और CEC. Over here you can simply check each and every year. You can gather the information about the target. They did use CHFI, a new certification coming in October.
Compare that one with the present day, or you can see the webalizer. कि उस टाइम में वो कौन सा एप्लीकेशन यूज करते थे, देख रहे हो? बट आई गेस ये जो दिखा रहा है रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये आपके बेसिकली archive.org का दिखा रहा है, ये स्पेसिफिक कहीं दिखा रहा है। सॉरी, 2013. Let's check the major. Okay, these are the major ones. Let's try this. Why we are using these tools? What is the main reason of this? We can gather the information about any of the website in the very first look. कभी कभार उसमें वेबसाइट में भी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जो कि एक हैकर और एक पेन टेस्टर उसको यूज करते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए। Now it's a little bit changed compared to this. Think about unthinkable event. You are skilled. CH, CSU, ECSA, ECSP, Certified Secure Programmer, LPT. I can identify and fix the vulnerabilities. I am licensed penetration tester. So there are lots of things. See. So over here, the main agenda of this website is to gather the information. We can simply look for about us or the training sessions. There are lots of information that you can gather. And the major agenda is to check each and everything one by one. Some location, some cities they have given, some registration link, all the things you should be seeing one by one. So there are many websites that can be used over here. Now you can see the webalizer Microsoft.asp.net. CMS they are using C and DML. IAS 7, 50% of sure. It's all about getting the information. And there are many techniques that can be used over here. The red indicates 500 and the 3 indicates redirect. See. Is it clear to everyone? Yes. Answer. Thank you.